Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter 2nd, that is Introduction to DBMS. In last lecture we have studied introduction of our DBMS, which means Relational Database Management System, and also we have seen some database concept. So in that basic database concept, we have studied what is table. So what is table? It is nothing but it is made up of rows and columns. So a table consists of different records, right? Then we have studied what is field. So what is field? A column in a table. A column in a table is called as a field, and the another name for the field is attribute. We have seen how many names for that? Column, field and attribute. Three names are given to that thing. That is field, column and attribute. Similarly, record. For what is record? A row in a table is called as record. A row in a table is called as record, or also we will call it as a tuple, right? So three names: record, row and tuple. Then key. What is key? We have seen the combination of different keys. They are called as what? Keys in a table. Okay, like we are saying the rows are there, different rows. They make the keys. Then primary key means what? This is a very important concept. Primary key and foreign key you should know. So the key which is uniquely identifying a row. Okay. So or we can say a column which uniquely identifies a row. जो कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को उसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, इट शुड बी यूनिक. वी कैन नॉट write duplicate values. That is called as a primary key. So roll number, it is always unique. One student cannot have the same, means two students cannot have the same roll number, right? Similarly, PAN card number, Aadhaar card number, employee ID, students ID, all these things are different for different students. This thing cannot be same of two other persons. Okay, मीन्स ये हमेशा डिफरेंट ही होगा. तो जो फील्ड यूनिक होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी की रख सकते हैं. और फॉरेन की क्या होता है? इट इज अ फील्ड और वी कैन से इट इज अ column in one table that refers to the primary key in another table. जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की से लिंक होता है उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं. ओके, व्हेन यू आर रिलेटिंग टू और मोर टेबल्स एंड द कॉमन टेबल कॉमन की, जो कॉमन होता है, जो प्राइमरी की होता है उसके साथ हम दूसरे टेबल को लिंक करते हैं रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए, तो वो जो दूसरे टेबल का की होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? Foreign key. Okay, so these things we have studied, and in last lecture actually I have mentioned that I will teach you relationships also in database, but for while explaining all this basic database concept, already the lecture was of 35 minutes and relationships explain करते तो और भी lecture extend हो जाता. That's why that topic today I'm going to teach you. So okay, so let's see today relationships. How many types of relationships are in there? There are in database, as well as we will see some SQL structured command also. So let's begin. Today we are going to study relationships in database, introduction to SQL, and lastly we are going to see types of SQL commands. So let's see one by one. First thing today we are going to study is relationships in database. So relationships link data from individual tables to increase the usefulness of the database. So see, it is going to link data from the individual tables. In one database there can be many tables. एक database के अंदर बहुत सारे tables हो सकते हैं, और relationships हमेशा एक table के बीच में नहीं बनेगा. It will be always created between two or more tables. Relationship, it is always created between
two or more tables so that we can increase the usefulness of the database. So इससे क्या होता है, relationships create करेंगे तो database का use जो करना है हमें वो increase हो सकता है. Okay, like if you're creating database of model college, in that you are going to create many tables. Like one table will be of students, another table will be of teachers, another table will be of classes, then library. Likewise, there will be many tables, and then you can form the relationship between two or more tables, right? Okay, so in this way we are going to use the relationships. Next, we can say that a relationship in the context of databases is a situation that exists between two relational database tables when one table has a foreign key that is used as a reference to the primary key of the other table. So see, relationship, it is, I told you before, when the primary key and foreign key will be there only when we are creating the relationship between two tables. जब हम दो tables या दो से ज़्यादा tables के बीच में relationship create करते हैं, okay, so that time you should have that one unique field. जो unique field होता है जिसको हम लोग primary key बोलते हैं. For example, roll number. Okay, so now if you are having two tables, अगर आपके पास में दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल और अनदर टेबल इज मार्कशीट टेबल. ओके, मीन्स वो स्टूडेंट टेबल का मार्कशीट. तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टेबल में यूनिक फील्ड कौन सा होगा, रोल नंबर, क्योंकि वो रिपीट नहीं होने वाला इसलिए. देन इन अ मार्कशीट टेबल ऑल्सो वी हैव टू क्रिएट द सेम field which is unique, that is a roll number. Okay, and we are going to create the marks of that. Okay, means मार्कशीट टेबल के हम लोग मार्कशीट टेबल में हम लोग रोल नंबर रखेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स लिखेंगे. ओके, सो जब ये दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा तो जो मेन टेबल है स्टूडेंट का, उसका जो रोल नंबर है वो आपका प्राइमरी की होगा और जो मार्कशीट का टेबल है उसका रोल नंबर आपका क्या होगा, फॉरेन की, क्योंकि हम लोग ये स्टूडेंट टेबल से मार्कशीट टेबल को रिलेशनशिप में क्रिएट करने वाले हैं. उन दो टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बनाने वाले हैं. तो दोनों में यूनिक फील्ड होना कंपलसरी है. तो दोनों में जो यूनिक फील्ड होगा उसके लिए हम लोग को रोल नंबर चाहिए दोनों में. तो दोनों के बीच में जो स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी की, और जो मार्कशीट के टेबल का रोल नंबर होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, फॉरेन की, बिकॉज दैट टेबल इज गोइंग टू रिलेट विद द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल, दैट्स व्हाई. ओके, देन there are three types of relationships in relational database design. So how many types of relationships are there in the database design? कितने types है, three types of relationships. How many types of relationships will be there? Three types. Now which are they? See, the first one is one to one. Okay, one to one relationship. Another one is one to many or many to one, and last one is many to many. So how many types of relationships are there? Three types of relationships are there: one to one, one to many, or this is also called as many to one, and the last one is many to many. Now we will see these three relationships in details. So let's see it one by one. So the types of relationship in that, first type is one to one. In a one-to-one relationship, one record in a table is connected with one and only one record in another table. So one-to-one relationship में क्या होता है, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है. Okay, one record in a table is connected with one and only one record in another table. एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है. See, I will show you the diagram over here. Your one table is your students table. Okay, ये एक टेबल है स्टूडेंट्स का. यहाँ पे तीन फील्ड्स लिखे हैं हम लोग ने, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. ये तीन फील्ड्स है वो टेबल के अंदर. सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग द अनदर टेबल, दैट इज द कॉन्टैक्ट इन्फो ऑफ द स्टूडेंट्स. सो दिस इज स्टूडेंट्स टेबल, और इनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए और एक टेबल बनाया है. वहां पे भी एक कॉमन फील्ड हम लोग ने रखा है, रोल नंबर, address and mobile number. Okay, so these are the two tables. Now if you want to create the relationship between this two table, then आपका common field कौन सा है, यहाँ पे roll number और यहाँ पे भी roll number है. तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, relationship create करना पड़ेगा. So see, I'm creating here the relationship between these two tables. So ये हो गया आपका main table. तो यहाँ पे roll number क्या होगा, primary key, और ये आपका
सेकेंडरी टेबल है, तो ये रोल नंबर क्या हो जाएगा आपका फॉरेन की. सो ओनली वन रिकॉर्ड इन वन टेबल, दिस इज वन टेबल, वन रिकॉर्ड is in one table is connected to one record in another table. ये दूसरा टेबल है और इसमें भी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को ये कनेक्टेड है. So this is called as what? One to one relationship. One more example we can say like one passport ID is given to only one person. ओके, सो पासपोर्ट आईडी सिर्फ एक ही पर्सन को एक ही रहेगा. ओके, एक ही पर्सन पासपोर्ट आईडी को उसी का डिटेल्स मिलेगा, दूसरे पासपोर्ट आईडी को दूसरे का डिटेल्स मिलेगा. एक ही पासपोर्ट आईडी के लिए बहुत सारे जन का इंफॉर्मेशन रहेगा क्या? नहीं. सिमिलरली सिंगल बैंक अकाउंट का भी अगर आप एग्जाम्पल लोगे, सिंगल बैंक विल हैंडल सिंगल अकाउंट ऑफ वन कस्टमर, यानी एक बैंक है उसमें सिंगल अकाउंट सिंगल कस्टमर का रहेगा, तो is a that is one to one relationship. Okay, so that is called as what? One to one. So एक रिकॉर्ड एक ही टेबल के अंदर दूसरे रिकॉर्ड से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पे कनेक्टेड रहेगा. ओके, वन रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल is connected with one record of another table. That is called as one to one relationship. Now let us see the another type, that is one to many. So the next type of relationship is one to many, or we also call it that has many to one. This is the most common relationship type. In this type of relationship, one record of one table is connected with many records of another table. So from the name itself we can say that एक record एक table का वो बहुत सारे record के साथ दूसरे table के साथ connect होगा. Okay, with many records of another table. So that is called as what? One to many. Now or many to one means the way which we look. आपने अगर मैनी को पहले देखा और वन को बाद में देखा तो आप बोलोगे मैनी टू वन. अगर आपने वन को पहले देखा और मैनी को बाद में देखा तो आप बोलोगे वन टू मैनी. सो बोथ आर सेम. सी द डायग्राम ओवर हियर. Here there is one customer's table. Customer ID is there and name is there. Okay, एक कस्टमर है, कस्टमर का टेबल है, उसमें कस्टमर को एक आईडी दिया है और उसका नाम है. Now this customer is ordering one product. So this is the orders table. Here one order ID is there, here one customer ID is there. So the same customer, we are talking about the same customer. Again he is going to order. After some days another order will be there. Again he is going to order something. Okay, तो यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप है? एक ही कस्टमर का बहुत सारे टेबल्स में ऑर्डर में. See this is one and this is many. तो यहाँ पे क्या है कि एक कस्टमर है जिसका सपोज कस्टमर आईडी वी विल राइट 1 2. ओके, सपोज कस्टमर आईडी हम लोग ने लिखा 1 2. ये कस्टमर है, this is the customer, and suppose this customer's ID is 1 2, or I will write 101. Okay, suppose the customer ID is 101. Okay, तो ये जो customer 101 है, इसने पहला एक ऑर्डर दिया सपोज मोबाइल फोन का. सपोज इसने यहाँ पे मोबाइल, so your customer is this customer 101 is, or this is also same customer 101. he is ordering first mobile. उसने एक बार ऑर्डर किया मोबाइल. सेकेंड टाइम ही इज ऑर्डरिंग सेम कस्टमर. ओके, यहाँ पे ऑर्डर आईडी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर आईडी मोबाइल के लिए था, ये दूसरा आईडी उसने सपोज कोई बैग. ओके, सपोज द कस्टमर इज ऑर्डरिंग बैग. So see, here this same customer 101 is ordering bag. This order ID will change क्योंकि ये order ID bag का है, ये order ID मोबाइल का है. Third order also the same customer is giving. Suppose the customer is now ordering what? Laptop.
order ID will remain same. Okay, now the customer is ordering 101, customer is ordering laptop, so that's why this order ID will different, this order ID is different, this order ID will be different and this order ID will be different. ये 3 orders के टेबल है, order ID यहाँ पे अलग अलग होगा लेकिन कस्टमर तो सेम है, सेम कस्टमर 3 बार। तो ऐसा नहीं है ना कि एक कस्टमर को सिर्फ एक ही ऑर्डर देना अलाउड है, ऐसा नहीं है। तो एक कस्टमर कितने भी ऑर्डर्स दे सकता है। सो दैट इज वन एग्जांपल, वन कस्टमर कैन ऑर्डर मेनी थिंग्स। ओके, मेनी ऑर्डर्स यू कैन गिव। सो वन टू मेनी, अगर आपने इस साइड से देखा, इस एंगल से देखा, अगर आपने पहले ये टेबल्स देखे तो आप क्या बोलोगे, मेनी टू वन। सो दिस इज नथिंग बट दिस डिफरेंस कैन बी व्यूड फ्रॉम द पर्सन हु इज विविंग, मीन्स वो किस तरह से इस टेबल को देख रहा है, उस तरह से इसका रिलेशनशिप रहेगा, मेनी टू वन या फिर वन टू मेनी। ओके, सो वन कस्टमर इज ऑर्डरिंग many many orders he is giving. So what we can say, we can say that this relationship is called as what relationship, one to many. Okay, same customer is ordering many orders, then that type of relationship comes in one to many. So again one more example I would like to tell you, like bank, हमने 1-to-1 में क्या देखा था, सिंगल बैंक सिंगल कस्टमर का रिकॉर्ड हैंडल कर रही है। ओके, सिंगल अकाउंट ऑफ वन कस्टमर, एक कस्टमर का एक ही अकाउंट हैंडल कर रही है। उसी तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सिंगल बैंक इज हैंडलिंग मेनी कस्टमर्स अकाउंट, एक बैंक बहुत सारे कस्टमर्स के अकाउंट को हैंडल करती है। सो वन बैंक आईडी, दैट इज अगर एक ही बैंक है कैनरा बैंक, तो कैनरा बैंक इज हैंडलिंग मेनी कस्टमर्स। सो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अगेन वी कैन से one to many. Okay, so this is the thing which we can say that how we view it. Okay, हम किस तरह से उसको देखते हैं। So understood what is one to many relationship? Okay, now let's move further and see the last relationship. Last type of relationship is many to many. A many to many relationship occurs when two or more records of one table is connected with two or more records of another table. So many to many relationship क्या होता है कि एक टेबल के when two or more records of one table, when टू और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ वन टेबल, एक ही टेबल के दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स अगर दूसरे टेबल के दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स के साथ connected है, then that type of relationship is called as many to many. So एक टेबल के दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स दूसरे टेबल के दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स के साथ connected है, then that relationship will be called as many to many type of relationship. Okay, so now I will give you the example also of this. Now see, this is a one example. Here one table is there, students table. यहाँ पे student ID is unique ID, right? फिर यहाँ पे student ID, last name, first name. These are the keys in this table, or we can say these are the fields in this students table. Similarly, there is one more table, that is the enrollment table. Your student ID is there, class ID is there. Okay, then यहाँ इस table के अंदर enrollment ID, student ID और class ID दिया है. Again one more table is there, that is a classes. Your class ID is there, class ID, title and description. So see, simple way I will tell you, जब आप लोग admission लेते हो, okay, when you are taking admission, so what you are doing, you are enrolling yourself in that college. आपने जब एडमिशन लिया तो आपने क्या कर दिया, आपने खुद को वो कॉलेज में एनरोल कर दिया, तो आपके नाम का एक स्टूडेंट आईडी बन गया। ओके, फिर वंस यू एनरोल, व्हाट वी डिड, वी डिवाइडेड यू इनटू द क्लासेस। मींस जैसे हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया, क्लास आईडी कैसे बनाया हम लोगों ने, मराठी के स्टूडेंट्स ए डिविजन, and again Marathi students in B division, likewise in C division, then Hindi students in D division and IT students in E division. So likewise we divided it. ओके, सो स्टूडेंट आईडी, एनरोलमेंट दिया, क्लास आईडी दिया, फिर स्टूडेंट का डेटा किस तरह से डिवाइड किया है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे उनका नाम और लास्ट नेम, वो इंफॉर्मेशन से सब, और यहाँ पे ये टेबल में कौन सा स्टूडेंट ने एनरोल किया और कौन सा क्लास आईडी है। ओके, अगर बोला कि क्लास आईडी इज IT03, likewise some example I'm just giving you, so that means this are the students of IT class. Okay, so फिर यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस दिए रहेंगे, क्लास आईडी यहाँ पे हम लोग क्लासेस के आईडी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल
A01. So A01 ID, class ID stands for 11th A class. That is a Marathi division. Then B02 means it is a B division Marathi class. Then C03 means Marathi class and Hindi. I think C division is now divided into two, Marathi and Hindi. So that is different class IDs we are giving. Okay. So here what, एक टेबल यहाँ पे देखो मल्टीपल रिकॉर्ड्स इससे भी कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कनेक्टेड है. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल कि मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ वन टेबल दे विल बी कनेक्टेड टू मोर रिकॉर्ड्स ऑफ वन और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल और टू रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिस इज द एग्जांपल. अगेन सिमिलर एग्जांपल वी विल गिव फॉर द बैंक एग्जांपल. जो हम लोग ने 1 to 1 में देखा, 1 to many में देखा, वही many to many में भी होगा. मल्टीपल बैंक्स विल हैंडल मेनी अकाउंट्स ऑफ मल्टीपल कस्टमर्स. सो एक बैंक नहीं, अभी मल्टीपल बैंक्स की बात कर रहे हैं. कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन HDFC, all these banks are there, different banks. So multiple banks, they are handling multiple accounts of multiple customers. बहुत सारे customers के multiple accounts होते हैं, वो सबको वो handle कर रहा है. So multiple banks, multiple accounts. Okay, so that is one example. Again, इसके पहले हम लोगों ने जो example दिया था customers और order, तो many customers can order the many different orders. Okay, so multiple customers can view. अगर आपको ये example में difficulty है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये डोंट कंसिडर दिस एग्जांपल, सपोज कंसिडर द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल कस्टमर्स. मल्टीपल कस्टमर्स सेम प्रोडक्ट को भी ऑर्डर करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी ऑर्डर करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो द एग्जांपल. वहां पे हम लोगों ने देखा कि एक कस्टमर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया. 1 to many में हम लोग ने वो एग्जांपल देखा. सिमिलरली इन केस ऑफ many to many हम लोग देखेंगे कि many customers are ordering many आइटम्स. ओके, सो बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे आइटम्स को ऑर्डर कर रहे हैं. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेनी टू मेनी. Okay, understood? If this example is not clear to you, then we can give the table of what, many customers. जैसे वहां पे लिखा था एक कस्टमर, तो वैसे हम लोग टेबल में बनाएंगे 3-4 कस्टमर्स और बहुत सारे ऑर्डर्स के लिए. मीन्स एक ही कस्टमर ने ये भी ऑर्डर किया, ये भी ऑर्डर किया, इन दैट वे. सो आई विल शो यू, ये ओनली आई विल शो यू. सी, now see here, this is one customer, this is one customer, this is another customer, and this is another customer. These are the 3 customers. This is order 1, order 2, order 3, order 4. These are the different orders placed by the customers. So suppose customer 1, this customer 1 is ordering this order and again this order. Okay, so similarly customer 2 is ordering, customer 1, order 1, order 2, order 3 and order 4. Okay, then customer 2 is ordering multiple orders, customer 1 is also ordering 2 orders, then similarly customer 3 is ordering 1, 2. It might be confusing to you because all the lines got crossed, that's why. So see, customer 3 is ordering 1 and 2. Okay, so this is what we can say, that this is the example of many
टू मेनी. ओके, नाउ यहाँ पे आपको ये कस्टमर के अंदर आपको क्या चाहिए, आपका कस्टमर आईडी भी चाहिए और ऑर्डर आईडी भी चाहिए. तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स होंगे, यहाँ पे दो यहाँ पे भी क्या होगा, कस्टमर एंड ऑर्डर आईडी रहेगा. तो यहाँ पे कस्टमर आईडी यूनिक मीन्स ये कस्टमर का आईडी रहेगा, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर ने क्या कौन सा ऑर्डर किया है इसलिए. और यहाँ पे ऑर्डर आईडी रहेगा क्योंकि इसने मल्टीपल ऑर्डर किए, तो इसके पास में ऑर्डर आईडी भी होना चाहिए. ये एक ऑर्डर आईडी, ये एक ऑर्डर आईडी, इस तरह से. ओके, सो मैनी डोंट ट्राई टू लुक आउट दिस लाइन, सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत सारे ऑर्डर्स करते हैं. तो एक कस्टमर दूसरा एक ये जो 3 कस्टमर्स, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक कस्टमर ने मोबाइल ऑर्डर किया तो दूसरा कस्टमर मोबाइल ऑर्डर नहीं कर सकता. ऐसा होता है क्या, नहीं. ऑनलाइन शॉपिंग में तो कौन कितना क्या क्या ऑर्डर करते हैं, सेम ऑर्डर बहुत सारे कस्टमर्स कर सकते हैं ना. सो वी कैन नॉट से दैट कि एक कस्टमर को सिर्फ एक ही अलाउड है ऑर्डर करने के लिए, या 2 कस्टमर्स में सेम ऑर्डर करना अलाउड नहीं है. इट इज नॉट द केस. ओके, सो हियर दिस इज द एग्जांपल, मेनी कस्टमर्स कैन ऑर्डर मेनी आइटम्स. सो दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एग्जांपल. I hope this is clear to you. Now this is all about the relationship. Now we will see the what is SQL. Now, introduction to SQL. So what is this SQL? SQL stands for Structured Query Language. So what is the full form of SQL? S means structured, Q stands for query, and L stands for language. So it is nothing but structured query language. It is a computer language for storing, manipulating, and retrieving data stored in a relational database. So whatever database you are writing in a computer or whatever database you are creating in a computer, so this is a one type of a language. ये जो SQL होता है ये एक तरह से language है. जो हम लोग DBMS यूज कर रहे हैं तो उसमें जो language यूज करते हैं उसे हम लोग SQL कहते हैं. That is a structured query language. So we'll be having one structure how to do the coding. Okay, so that language, this is used for storing, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा. सो जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस के अंदर या जो मैनिपुलेट कर रहे हो, मीन्स यू वांट द फील्ड्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और द डेटा सैलरी शुड बी सो डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द पर्सन्स हु आर हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000. दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन, डूइंग द मैनिपुलेशन थिंग्स, और रिट्राइविंग द डेटा और गेटिंग द डेटा. ओके, और if you want to update or delete the data, all that things are called as what, manipulation. So storing, updating, manipulating, inserting, deleting, retrieving, all these things are done in a database using what, computer language, which is called as a structured query language. Okay, so SQL is the standard language for relational database management system. So जो भी RDBMS आप यूज करते हो उसके अंदर जो language होता है that is a SQL and it is a standard language. Okay, this is what SQL is, the standard language which we are using in relational database management system. Okay, so using SQL we can now see हम लोग database जो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग डायरेक्टली डिजाइन व्यू में जाके भी कर सकते हैं या फिर हम क्वेरी भी लिख सकते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए. ओके, सो either you can directly create the table by using the design view, and if you want to write the query, then that query you can write using the SQL. So by in that way also we can create what, tables, database, we can insert records. So using SQL what we can do, see, we can create new database. So SQL का language use करके आप database new create कर सकते हो. Then you can create new tables in database. database के अंदर आप नए tables बना सकते हो. Then you can insert records in database. So you can insert records in database means you can insert tables. टेबल्स के अंदर आप जो रिकॉर्ड्स बनाते हो वो डेटाबेस का रिकॉर्ड ही होता है. ओके, देन यू कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस. डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड्स है उसको आप लोग अपडेट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो.
and you can retrieve records from database. Means you can whatever database से आपको जो records आपको display करना है, देखना है, वो आप retrieve भी कर सकते हो. And lastly we can delete also records from the database. So using what? SQL. SQL, by using the structured query language, you can create new database, you can create new tables in database, you can insert records in database, you can update records in database, you can retrieve records from database, you can also delete records from database. Okay, so all these things you can do using SQL. So आप structured query language का use करके ये सब बातें आप क्या कर सकते हो, query के use करके कर सकते हो. Okay, so this is what SQL. SQL stands for structured query language. It is a computer language we are using for what purpose? Storing, manipulating and retrieving data which is stored in database. Similarly, this SQL is what? It is a standard language for relational database management system. And using SQL, we can do what things? We can create new database, we can create new tables, we can insert new records, we can update the records, and we can delete the records, and we can retrieve. Retrieve means what? Display the records. Okay, so all these things we can do using SQL. Now we will see some commands which are used, or the categories, or we can say types of SQL commands which are used. Okay, so categories और types of SQL commands. जो commands होते हैं उनकी कुछ categories है, उन लोग इसमें divide है 3 categories में. Okay, so see, it is divided into 3 categories, or you can say 3 types of SQL command. One is a data definition language which is called as DDL commands. So DDL stands for, what is the full form? This is very important, you should remember the full forms, what this stands for. DDL stands for data definition language. So this is one type of a command. Another one is data manipulation language, that is DML commands. So data manipulation language, DML commands. And lastly we are going to see the data control language commands, that is DCL commands. Okay, data control language, DCL, data control language commands. How many types of SQL commands are there? 3. Or how many categories are there of SQL command? 3. DDL, that is data definition language, DML, data manipulation language, and lastly data control language. Now we will see what are the commands used in this 3. Okay, एक एक को देखते हैं. First we will see data definition language, इसमें कौन से command use होते हैं. Then we will see data manipulation language, इसमें कौन से command है. And lastly we will see data control language, इसमें कौन से commands है. So the first is data definition language. So here see, from the name itself we can say data definition means it is going to define something. आप जब भी कुछ चालू करने वाले हो तो पहले उसको define जो करते हो, that is called as a data definition language. Okay, so what commands are used in this data definition language, that we will see. Commands and used for. So the first command is create database. So the first command which we are using in data definition language is create database. Then what is the use of this? It is used for creating database. Create database command क्या होता है? ये database create करने के लिए use होता है. Next is create table. So this command is used for what? For creating a table. Okay, it is used for creating a new table in the database. Then alter table. What is the meaning of alter table? Alter means what? Modify or update. Okay, अगर आपको table को change करना है, modify करना है, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? अल्टर टेबल. सो इट इज यूज फॉर मॉडिफाइंग अ टेबल. अगर आपको टेबल को चेंज करना है, सी टेबल की रिकॉर्ड्स को चेंज करने की बात नहीं हो रही, टेबल को मॉडिफाई करना है. टेबल को मॉडिफाई करना मीन्स क्या होता है कि जो हम लोग ने फील्ड्स लिखे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ये जो डेटा है टेबल का वो चेंज करना है तो आपको अल्टर टेबल करना पड़ेगा. ओके, lastly is what? Not lastly, drop table. Drop table and drop database is also there. So drop table means what? Drop the table means you want to delete the
टेबल. ओके, सो इट इज गोइंग टू डिलीट अ टेबल. अगर आपको टेबल को डिलीट करना है जो आपने क्रिएट किया है तो उसको हम लोग ड्रॉप टेबल कमांड देख के उसको डिलीट कर सकते हैं. ओके, ड्रॉप टेबल मींस यू वांट टू गिव द नेम ऑफ अ टेबल आल्सो, कि कौन से टेबल को आपको डिलीट करना है या ड्रॉप करना है. लास्टली वी कैन से ड्रॉप डेटाबेस. अगर आपको पूरे डेटाबेस को ही डिलीट करना है देन ड्रॉप टेबल विल बी यूज. ओके, ड्रॉप डेटाबेस क्या करता है, डिलीट्स अ डेटाबेस. So how many commands are there? 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 commands आपको DDL में ही DDL के होते हैं. Okay, data definition language की how many commands are there? 5 commands. You want to remember this 5 commands which comes under DDL. हर एक commands के अंदर जो commands आने वाले हैं वो आपको याद होना चाहिए. अगर match the following फिलअप्स में कहाँ पे भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये command कौन से लैंग्वेज का है. ओके, DDL क्या है, DCL क्या है, DML क्या है. इसीलिए सो क्रिएट डेटाबेस, इट इज गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस. जो डेटाबेस आप क्रिएट करते हो, बनाते हो, उसके लिए कमांड होता है क्रिएट डेटाबेस और उसका नाम. देन क्रिएट टेबल, इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, न्यू टेबल. अगर आप कोई नया टेबल बना रहे हो डेटाबेस में तो आपको देना पड़ता है कमांड क्रिएट टेबल. अल्टर टेबल मीन्स अगर आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है टेबल, देन दैट टाइम यू वांट टू गिव अल्टर टेबल. नेक्स्ट इज ड्रॉप टेबल. अगर आपको टेबल को डिलीट करना है तो आप ड्रॉप टेबल. देन अगर आपको डेटाबेस को ही डिलीट करना है तो आपको ड्रॉप डेटाबेस देना पड़ेगा. ओके, so this you want to remember the commands which are used in this. Now we will see the next one, that is a data manipulation commands. DML, that is a data manipulation language. So यहाँ पे मैनिपुलेट करने वाले मीन्स हम लोग को अपडेट करना है रिकॉर्ड. टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं वो. ओके, if you want to update the records, if you want to display it, if you want to delete it, okay, या फिर insert करना है. So the DML commands and what are they used for? So the first command here is select. So select is a command which comes under DML. अगर टेबल के अंदर जो लिखा है वो आपको देखना है, मीन्स आपको कौन से फील्ड्स चाहिए, जैसे कि आपको रोल नंबर देखना है, स्टूडेंट का नाम देखना है, उसका एड्रेस देखना है और उसका मोबाइल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट कमांड लिखोगे. ओके, द सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ टेबल. तो ये सेलेक्ट कमांड कैसे लिखते हैं वो मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि कैसे लिखा जाता है. सेलेक्ट, मैंने क्या बोला था, रोल नंबर. सो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एड्रेस कॉमा मोबाइल नंबर. ओके, मोबाइल नंबर. फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम मीन्स अगर सपोज टेबल का नाम स्टूडेंट्स इन्फो है तो फ्रॉम स्टूडेंट्स इन्फो. सो दिस विल बी द कमांड. ऐसा कमांड मुझे देना पड़ता है. सेलेक्ट रोल नंबर नेम एड्रेस और मोबाइल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो. तो फिर वो क्या करेगा, वो जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो टेबल के अंदर, वो स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स आपको दे देगा. आपका रोल नंबर डिस्प्ले करेगा, नेम डिस्प्ले करेगा, एड्रेस डिस्प्ले करेगा और टेलीफोन नंबर सारे स्टूडेंट्स के. Okay, so this is a select command. Okay, it is going to display or it is going to extract data from the table. Then the next one is update. Update means what? अगर आपको टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, अपडेट करना है, तो दैट टाइम यू कैन यूज विच कमांड, अपडेट. ओके, सो इट इज गोइंग टू अपडेट डेटा इन अ टेबल. टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको अगर आपको चेंज करना है. और जो DML में था, सॉरी DDL में जो था वो था अल्टर. अल्टर उसमें क्या होता है, अल्टर का कमांड वहां पे क्या यूज करता है, अल्टर टेबल मीन्स आपको फील्ड्स के नाम जो चेंज करने पड़ते हैं, जैसे रोल नंबर स्टूडेंट नेम वो जो थे वो फील्ड्स. और ये क्या काम कर रहा है, ये टेबल के अंदर का जो डेटा है. जैसे कि अगर मैंने रोल नंबर 2 का नाम लिखा है सूरज. ओके, लेकिन मुझे रोल नंबर 2 का नाम सूरज नहीं चाहिए, मुझे सुहास चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, आई विल अपडेट रिकॉर्ड इन द टेबल. टेबल के अंदर जाके मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर रही हूँ. सो दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज अपडेट. अगर मुझे अल्टर टेबल करना है, अल्टर टेबल अगर मुझे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम मुझे लास्ट नेम लिखना था, नहीं लास्ट नेम इंस्टेड ऑफ लास्ट नेम मुझे सर नेम लिखना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं अल्टर टेबल करूंगी. अल्टर टेबल उसमें जाके हम लोग क्या करेंगे, सर नेम इंस्टेड ऑफ लास्ट नेम हम लोग सरनेम लिखेंगे. तो हम लोग फील्ड चेंज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं, फील्ड का नाम चेंज कर रहे हैं अल्टर टेबल में. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टेबल का डेटा चेंज कर रहे हैं, जो हम लोग रिकॉर्ड्स लिखे रहेंगे उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं. Okay, then next one is delete. Delete means what? It is going to delete the record from the table. So it is used for deleting what, data from a table. Table के अंदर का डेटा हमको अगर डिलीट करना है तो
और dd डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो हम लोग ने देखा ड्रॉप टेबल मीन्स वो टेबल को पूरा डिलीट कर देता है, टेबल को डिलीट करता है। यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है। ओके, जो रिकॉर्ड्स हम लोग ने 10 रिकॉर्ड रखे होंगे उसमें से मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आई विल डिलीट दैट रिकॉर्ड, सेलेक्टेड रिकॉर्ड। ओके, देन insert into is used for what? If you want to insert new record, अगर आपको टेबल में 10 records से आपको और 5 ऐड करने, then by using insert you are going to add new records in the table. Okay, you can insert data into a table. So I hope this is clear to you. This DML ये टेबल के अंदर काम कर रहा है। ओके, DML टेबल के अंदर की बातों को काम करता है, जैसे कि रिकॉर्ड डिस्प्ले करना, टेबल के डेटा को अपडेट करना, टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना या फिर नया रिकॉर्ड एंटर करना। ओके, दिस आर द कमांड्स ऑफ DML. नाउ लास्ट कमांड वी आर गोइंग टू सी, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. So the last type of command is data control language, that is DCL. Here the control says that control means it should have control on the database, means कौन control कर सकता है database access करना, डेटाबेस को डिलीट करना, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को व्यू करना. सो ऑल द एक्सेस कंट्रोलिंग परमिशन देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल. So here the commands which are used for, which are that commands we will see. The first is grant. Grant means what? Granting the permission. So grant itself says that it is giving you the permission. Grant means it is going to provide access on the database object. Means this is going to grant the permission कि database के objects को हम लोग access कर सकते हैं, means उसको देख सकते हैं, okay, या उसको हम लोग use कर सकते हैं. So granting the permission. The opposite of grant will be revoke, means taking out the permission, removing the permission. Revoke means what? Permission रिमूव कर देना, जो परमिशन किसी को दिया है उससे वो रिमूव कर देना. सो रिवोक मीन्स व्हाट? टू रिमूव एक्सेस राइट्स ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट. जो एक्सेस दिया था, ग्रांट परमिशन जो दिया था वो यूजर को, अगर लगा कि वो यूजर उसका मिसयूज कर रहा है तो उससे वो एक्सेस रिमूव भी कर सकते हैं बाय रिवोकिंग, बाय यूजिंग विच कमांड? रिवोकिंग. ओके, सो बाय रिवोकिंग वी कैन रिमूव द एक्सेस राइट्स ऑन द डेटाबेस objects. So these are the two commands which are controlling commands. Okay, means control commands. Which are they? Grant and revoke. Granting the permission and revoke means removing the permission. Okay, so these are the two. Now in this way we have completed our introduction to DBMS chapter. In next lecture mostly I am going to start the practicals. So whatever the practicals are there, that we will see online. Okay, so this is all for today. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.